in WhatsApp, okay? So the last questions. No. Yes. Yesterday I told na that you try these questions, one of these. Oh. No, sir, I didn't do. So you have not tried this, okay? But see, you guys need to try it. Otherwise, I'll be explaining the same. Going to try, then you will make certain mistake. Harsha will make some different mistake. Martin will make some different mistakes, and from those mistakes you will learn. Okay, so the three steps are same: number of H plus or OH negative per molecule of acid or base. Using that information, you will calculate the number of moles. Then you will calculate the difference of OH, H positive and H negative, and then you will get whatever is higher that will be remaining, and then you will get the concentration of H plus or OH negative depending on what is in greater amount, and then you will divide it by the volume that you are having and the total volume. Okay, so the steps are going to be the same. And if you have not tried, then I will move on to the next topic, because if I'm going to tell you the same thing again, it will not benefit you guys, है ना? आप लोग अगर practice करके आते तो moving on. The next topic that you need to write is the equilibrium between acid and bases. ठीक है? Acid base equilibrium. तो जब acid dissociate होता है, then we will talk about the equilibrium when acid get dissociated and when base get dissociated. ठीक है? Or rather, you write the topic like this: ionization of base. Acids and base. You see here. First of all, we will take the dissociation or ionization of what acids. Now, whenever they are going to dissociate, they will dissociate and they will achieve equilibrium. And when they achieve equilibrium, at that time their concentration will be what? Constant. So we will talk about the ionization constant or dissociation constant of acids and bases. Okay. So in ionization of acids and base, the first topic that we'll be studying is ionization or dissociation constant of acids. Okay. So what is an acid? Acid are generally represented as Ha. Okay. They are generally represented as Ha. And when it is dissolved in water, H2O liquid, this is going to give you, rather I should show a reversible reaction or at equilibrium. It is going to have H3O positive plus A negative. Both of these are in aqueous medium. The only thing that is not in aqueous medium is the H2O liquid. Here we are having an equilibrium, so we can define a K. That is the equilibrium constant, which will be equal to products upon reactant. So in the products, we have H3O positive, the concentration of H3O positive multiplied to the concentration of A negative. If you remember A negative is also the conjugate base. The conjugate base of the acid. And once you remove the H plus ion, you get what? Conjugate base. This will be divided by, in the reactant side, we have the acid Ha and we have H2O liquid. Now, since H2O is a pure liquid, we don't consider it. And that is why the Ka will become, the dissociation constant of acid is written as H2O goes that side, and you will get H3O positive. So why is A negative the conjugate base? You were there when we learned about Bronsted-Lowry acid base concept. No, sir. आप इस क्लास में नहीं थे? When we started with Arhes concept Bronsted-Lowry. Yes, sir. I was there. So you must remember now. Add H plus to make conjugate acid, remove H plus to make conjugate base. So if I talk about Ha and A negative, what is the relationship?
It is acid, and A negative is the conjugate base of Ha. है ना? It's part of thermodynamics. No, equilibrium only ना. Okay, so इसी I'll check. का है. ठीक है, एक बार देख लीजिएगा. ठीक है. So we are remaining with what? H3O positive multiplied by the concentration of A negative divided by the concentration of Ha. ठीक है. Since H2O is a liquid, we don't consider it. Now generally we write it like this. लेकिन यहाँ पे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं आसानी के लिए, और you can denote the dissociation constant of an acid Ka as what? H plus, the concentration of H plus multiplied by the concentration of A negative divided by the concentration of Ha. ठीक है, the acid. Okay. Now, if the acid is a strong acid, then what would happen? It will give you a large amount of H3O positive. Basically, H3O positive is H plus ion which attaches to water molecule. है ना? H plus ion, we generally say H plus, but H plus cannot exist because H plus it is only one proton. है ना? So a proton does not exist in water. It will attach to oxygen atom and make H3O positive. But for simplicities and for ease, we use this word H plus. लेकिन H plus रियल में exist नहीं करता है. ठीक है? But for simplicity, we can take it. There's nothing wrong. No. Yeah, what I was saying is that if we have a strong acid, this would give a large amount of H positive, meaning there will be a large amount of H3O positive and there will be a large amount of A negative. That means what I'm saying is Ha, the acid, dissociates easily. If it dissociates easily, it is a strong acid. And if it dissociates easily, the Ka will be very high because the concentration of H positive will be high and the A negative will be high. And the concentration of Ha at equilibrium, I'm not talking about the initial concentration of acid. I'm talking about the concentration of acid at equilibrium. Concentration of acid at equilibrium will be very low because all the acid will be dissociated in the form of H plus and A negative. So I can write here for strong acid, Ka has large value. Ka की वैल्यू क्या होती है? लार्जर वैल्यू. ठीक है ना? जितना ज्यादा Ka का वैल्यू होगा उतनी ही ज्यादा what will be there? The acidic strength will be there. ठीक है? एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा. फाइन. नाउ there are some acids or there are some in general electrolytes which do not dissociate completely. For example, we have acetic acid. है ना? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. Mineral acid and organic acid. Mineral acid are stronger, they dissociate completely. Organic acid do not dissociate completely. है ना? Organic acids are weaker acid. So when we talk about weaker acid, we have to talk about the degree of dissociation. ठीक है? We'll talk about degree of dissociation. So for strong acid, Ka has larger value, large value. है ना? अब next point is the concentration of H plus. How will we determine? ऐसे लिख लीजिए concentration of, rather just write for weaker acid. For weaker acids. ठीक है? Now for weaker acid, we have to define a term that is known as degree of dissociation. ठीक है? What is degree of dissociation? Degree of dissociation. It is the fraction of total number of molecules of an electrolyte. Now this electrolyte can be acid, base, or salt, which ionizes into ions. ठीक है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं अल्फा से. अल्फा इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which ionize या dissociate divided by
total number of molecules of electrolyte. ठीक है, total number of molecules of electrolyte. Now please remember this alpha, it is rather this whatever we have written equal to, it is not a formula, rather more of a definition. Total number divided by total number of molecules which ionize divided by total number, fraction हो गया है ना. So it is more of a definition type of thing which we can use as formula also, but it is mainly a definition. ठीक है, mainly क्या है, definition है यहाँ पे. ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट अस सपोज अल्फा क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आयनाइज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नाउ द अल्फा ऑफ मेनी ऑफ द वीकर एसिड इट हैज बीन रिटन. ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, वो आपको पता रहेगी. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक आपके पास वीक एसिड है, लेट अस सपोज यू हैव अ वीक एसिड, उसको हमने H1 बोला है. एंड HA इसका जो अल्फा है, द अल्फा फॉर HA इट इज इक्वल टू 0.1. ठीक है, देयर इज अ नंबर गिवन, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग बियॉन्ड दिस पार्ट, है ना, इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा आप. सिर्फ ध्यान से सुनिएगा. अल्फा इज 0.1. व्हाट डज इट मीन? इट मींस 1 out of 10 molecule ionizes. Make sense? Yes or no? Tell me guys. Harsha and Martin. सही है. अल्फा दिया रहेगा तो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं अल्फा का, राइट हर्षा? So can you explain again? हाँ, आई एम सेइंग वी हैव एन एसिड HA और उसका अल्फा दिया हुआ है कितना, 0.1. सो 0.1 मींस व्हाट, 1/10. 0.1 मींस 1/10, राइट हर्षा? Yes, sir. So 1 is what? Molecule of number of molecule which ionize, total number of molecules of electrolyte. है ना? It means what? Out of 10 molecules, if you take 10 molecules, one of them will be ionized. Make sense? Okay. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे, for example, I have taken, let us suppose अगर हम 10 molecules लेंगे HA का, then how many will ionize? 1 will ionize. If I take 20, then how many will ionize? 2. 2. If I take 50, then how many will ionize? 5. 5. If I take 100, then how many will ionize? 10. 10. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, we can use this information and the alpha in order to get a formula, है ना. तो अगर हम बात करें like how many molecules are getting ionized, then I can say this is equal to 1 कैसे आया, 10 into alpha किया हमने, 10 into 0.1 कीजिए आप, that is the alpha. 2 कैसे आया, 10 sorry the 20 Alpha to is total number of fixed. 1 into 0.1, sorry. There is alpha constant. हाँ, अल्फा इज अ कांस्टेंट फॉर एन एसिड, अल्फा इज अ कांस्टेंट. ठीक है, अब वही 5 के में क्या आ जाएगा, 50. 5 कैसे आया, 50 इंटू 0.1 किया आपने, है ना. और ये 10 कैसे आया, 100 इंटू 0.1 किया आपने. मेक सेंस? ये सुनो, ऐसे ही आया ना हर जगह, राइट? Yes, sir. राइट हर्षल? ठीक है, दैट मीन्स we can say that the number of molecules which is being dissociated, it is equal to C alpha. C is the concentration, alpha is the dissociation constant for weak acid. Make sense? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जरा. If you remember the ice table, if you remember the ice table, then please see. We have HA for weak acids, है ना, which is in equilibrium with H positive and A negative. अब यहाँ पे I am taking the initial concentration. जो initial concentration हम ले रहे हैं, that is, let's suppose it is C. Here we have initially 0, 0. I have taken C concentration of what? I have taken C concentration of HA. Second आपके पास change. चेंज जो आएगा कितने का आएगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HA विल रिएक्ट. ठीक है, कितना मोल रिएक्ट करेगा. सो प्लीज रिमेंबर द नंबर ऑफ मोल्स इट इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड इज व्हाट, C alpha. तो माइनस क्या करेंगे हम, आई विल बी माइनसिंग C alpha बिकॉज उतना ही तो डिसोसिएट होगा इफ अल्फा इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. मेक सेंस हर्षा? Yes, दिस sir. इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आपके पास माइनस C alpha इतना डिसोसिएट हो जाएगा. How many H positive we will be getting? We will be getting C alpha H positive, and how many A negative? C alpha A negative. Now at equilibrium, what will be there remaining? At equilibrium, we will be having C minus C alpha.
of Ha molecules, we will be having C alpha of H plus molecule and we will be having C alpha of A negative molecules. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now for C alpha, if you see, I can take the C common और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus alpha. Make sense? Yes or no? Yes. ठीक. Now for this, the dissociation constant Ka can be written as what? The concentration of product upon reactant at equilibrium. Concentration of product at and reactant at equilibrium. So in equilibrium, H plus and A negative is what? C alpha into C alpha, right? And the reactant is C into 1 minus alpha. Make sense? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जरा. Here we can write this as C alpha square divided by C into 1 minus alpha. That is Ka. ठीक है. So C Fine. square alpha square, right? C square alpha square है हमारे पास. और आधा चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं. It's fine now. Yes or no, please tell me. Yes. Okay. Now So they are the concentrations, right? C is concentration. Okay, sir. C is concentration. Alpha is just a number. Fraction बोला था हमने. Yes. Make sense? ठीक है. Yes. Now if alpha is very small और आपको Ka दिया हुआ है and Ka is very small और Ka is very small. ठीक है. स्मॉल का मतलब ये 1 से बहुत ज्यादा छोटा हुआ अगर अल्फा. ठीक है. और Ka की वैल्यू 10 to the power -3 से बहुत ज्यादा कम. ठीक है. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन इग्नोर द अल्फा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये सुनो. ठीक है. सो इन दैट केस यहां से सिर्फ 1 माइनस अल्फा से इग्नोर करेंगे, सी अल्फा स्क्वायर से इग्नोर नहीं कर सकते. मेक सेंस? ये सुनो. Yes, sir. ठीक है. ओके. अच्छा, बाय द वे वी कैन डू वन मोर थिंग. तो यहाँ पे वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर मोर. इफ आई राइट सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो एक सी और एक सी यहां से कट जाएगा एंड वी कैन राइट के ए इट इज इक्वल टू सी इंटू ओनली अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है. फाइन. नाउ प्लीज सी. Yes. So or k is very small, then alpha will be very 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 less than 1. Therefore alpha can be ignored at. ठीक है. ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, इसको हम आगे नहीं लिख रहे. अल्फा कैन बी इग्नोर बिकॉज आप यहां से इग्नोर मत कर दीजिएगा. ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट नाउ, द के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1. मेक सेंस? Sir, ये सुनो प्लीज. alpha square can also be ignored, right? नो, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड ना. कैसे इग्नोर कर सकते हैं उसको? इग्नोर Sir, करते हैं याद कीजिए सिर्फ कंपैरिजन में. राइट हर्षद? sir, if you're squaring, then it will become even smaller, right? तो फिर ये सी को भी तो बहुत ज्यादा छोटा कर देगा. इसका तो इफेक्ट रहेगा ना. इट विल अफेक्ट दी सी ना. Okay, sir. है ना. सिर्फ कंपैरिजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया जाता है. ठीक है. Okay. इसमें इग्नोर नहीं करते हैं उसको. आप 1 नहीं ले, मतलब इग्नोर करके क्या लीजिएगा आप? ठीक है. इग्नोर करने का मतलब क्या, इसको हटा दें यहां से? Okay. ओके ओके. नहीं, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? Yes, sir, understood. अंडरस्टूड ना. ठीक है. तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. ठीक है. नाउ हियर अब आपके पास मान लीजिए आपको के ए दिया हुआ है. आपको अगर अल्फा दिया है के निकालना, तब आप के निकाल सकते हैं. और अगर आपको अल्फा दिया है और सॉरी आपको अगर के दिया हुआ है अल्फा निकालना है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. अल्फा को आपने एक तरफ रखा, के सॉरी सी नीचे आ जाएगा. सो यूल हैव के ए डिवाइड बाई सी द कंसंट्रेशन एंड देन यू कैन रूट ओवर इट. ठीक है. सो दिस विल गिव यू द अल्फा अगर आपके पास के और कंसंट्रेशन दिया हुआ है. ठीक है. तो फॉर वीक एसिड यू विल राइट दिस होल थिंग डाउन. दी आइस टेबल से ही स्टार्ट करना है आपको, है ना. Yes, sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक लिख लिया आपने? हाँ जी हाँ. ठीक है. फिर उसके बाद ये लिख लीजिए.
Raise your hand once you're done. Waiting for Martin. Sir, so for strong acids, the dissociation will be more. इट विल बी देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जैसे आपके पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उनका डिसोसिएशन 1 होता है, दे कंप्लीटली डिसोसिएट ना। Yes, sir. ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट में मतलब जैसे ऑलमोस्ट 99% डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे द मोस्ट देख उसको आप कंप्लीटली डिसोसिएटेड ही लेके चलिए, है ना। 99% डिसोसिएट हो जाता तो 100% ही आपको लेके चलना पड़ेगा। लाइक वी विल सी इफ देयर इज एनी न्यूमेरिकल जहां पे आपके पास वो वाला केस है, ठीक है। बट आपको जब भी के दिया रहेगा देन यू विल यूज द के थिंग, ठीक है। चलिए खैर, मूविंग ऑन। नाउ वी हैव गॉट अबाउट के ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में भी। के का मतलब क्या हो गया, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया अल्फा इज द व्हाट फॉर वीक एसिड ओनली, है ना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Then we have a similar thing as that of pH, that is known as pKa. तो pKa क्या है, pKa it is equal to minus log of K। अब ध्यान रखिए जरा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, Ka इज लार्ज। अगर Ka लार्ज है दैट वुड मीन व्हाट, इट वुड मीन log of Ka is also large। If the log of Ka is large, that would mean minus log of Ka will be smaller value। क्योंकि अगर आप देखिए 7 ले लें और 8 ले लें और दोनों में माइनस लगा दें, -7 -8, कौन छोटा वैल्यू हो गया, अगर जो बड़ा था वही ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया, राइट। सो इफ यू एड अ नेगेटिव साइन देन द वैल्यू बिकम्स lower। So minus log of K is small, that would mean the pKa would be what, small। That means strong acids have lower value of pKa। Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Strong, rather I should write it like this. Okay. Lower the value of pKa, stronger is the acid। ठीक है, मेक सेंस? yes or no? इसका उल्टा क्या हो जाएगा, larger the value of pKa, weaker is the acid। मेक सेंस? yes or no? Please tell me। Yes, sir. ठीक है, अब उसके बाद अगर आपके पास वीक एसिड हो, ठीक है ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वीक एसिड। वीक एसिड के लिए अगर आपको H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वहां से वो सीधा निकल जाएगा, कैसे, H+ की कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज रूट ओवर
डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहना चाहिए आपको। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं दिया, अल्फा दिया है, देन यू विल कैलकुलेट दी देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो ऐसे निकल जाएगा रूट अंडर के ए इंटू सी। ठीक है, सी इज व्हाट, द कंसंट्रेशन, विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, H प्लस आयंस। और यहाँ से फिर आप क्या निकाल सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन, इफ यू गॉट द H प्लस आयन, यू कैन कैलकुलेट द pH आल्सो। ठीक है, सो कीप दिस फॉर्मूला इन हैंड। Next, we have seen what the ionization or dissociation constant of acids. Second है आपके पास ionization Solar punch. और dissociation constant Okay, sir. of bases. मतलब ये फॉर्मूला इट इज यूजुअली फॉर वीक एसिड, ठीक है ना। Then how अगर did you आपको get के, that formula? सॉरी हर्षा, Then how did you get that formula? वो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक Okay. है, एक हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जब ना सवाल करेंगे, देन यू विल सी, ओके फाइन, यहाँ पे के ए इंटू सी आ रहा है। ठीक है, जस्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के बाद तुरंत हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, बट वो वही है ना कि वो जब फॉर्म वो एग्जाम्पल में आएगा, नोट्स में नहीं रहेगा आपके, तो छूट सकता है, तो वैसे हमने यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस, दिस इज गिवन बाय केबी। और आपके पास बेस को हम लोग डिफाइन, मतलब बेस को लिखने का एक जनरल तरीका होता है BOH, which would be in equilibrium with OH negative, and it will give you what, B positive. Now this B positive thing, it is what, this is the conjugate acid of BOH. Make sense, yes or no? Yes, sir. ठीक है, this is conjugate acid of the base that we are having. चलिए, now next thing हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे, द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड एवरीथिंग ना। तो आपके पास Kb will be equal to the concentration of B positive into the concentration of OH negative divided by the concentration of the base that we are having, BOH. ठीक है, and So we don't same have to add water. वाटर है, लेकिन मतलब aqueous मीडियम में रहता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है। Okay. इट इज जस्ट इम्प्लिसिट व्हेन वी आर राइटिंग लाइक दिस। वो वाटर वाले जो हमने एसिड के लिए किया ना, सेम चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, बिकॉज सब कुछ सेम ही है, लेकिन आपको आइडियल वो चल लेके चलना है जो हमने एसिड के लिए किया है, जिसमें सारा डिटेल्स है। फाइन हर्षा, Yes, sir. हम जैसे यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, strong acids will have higher value of Ka. Strong acids will have higher value of Ka. आपको कंपैरिजन दे दिया गया, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, बेसिस चल रहा है, बेसिस, माय बैड, स्ट्रॉन्ग बेसिस will have higher value of Kb, ठीक है। नाउ फॉर वीक बेसिस क्या करेंगे हम लोग, सेम थिंग, आइस टेबल बनाएंगे। वी हैव BOH in equilibrium with B positive plus OH negative. Initially, I have taken C concentration, इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो चेंज आएगा, that will be equal to C into alpha. यहाँ पे ये minus C alpha होगा, here you will have plus C alpha, here also you will have plus C alpha. At equilibrium, it will be equal to C common ले लिया हमने, 1 minus alpha हो गया, here we will be having what, C alpha, and here also you will be having C alpha. Everything is making sense, yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, देखिए जरा, and then we can write Kb is equal to C square
अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, But in अब the यहाँ से reactant side, we add I and C, and in the product side, we नहीं समझे आप क्या पूछ रहे हैं आप? so like for the equilibrium, we हम्म, add I and C हाँ, in the reactant side. या देयर आल्सो वी आर एडिंग ओनली ना, Okay. मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 और Yes. -2 को ऐड कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, मेक सेंस, Yes. है ना? ठीक, ये इनिशियल था, ये चेंज हुआ तो बचा इतना। ठीक है, वो आपको याद है ना, C माइनस सी अल्फा आता, C को हम कॉमन लेते तब जा कैसा होता। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द Yes. एसिड्स ओनली, सेम है Okay. बिल्कुल। ठीक है, KB will be equal to C square and C will be cancelled. We will have C alpha square upon 1 minus alpha. Again, if alpha is very small or KB is very small, then alpha will be very, very small than 1, and we can write KB is equal to C alpha square. That would imply alpha is equal to KA divided by C root over. तो यार हमने उल्टा लिख दिया, KB लिख दीजिएगा, KB। Waiting for Martin. चलिए, अब देखिए, धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, है ना? अब फॉर एसेट्स एंड बेसिस, एक तो आपके पास हमने कुछ तरह के सवाल कर लिए थे, उसको एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे पहला टाइप का सवाल आएगा आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ टाइप 1, कैलकुलेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस कर देंगे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आप लोग बस कॉपी कर लीजिए, देखिएगा, अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू विल आस्क मी राइट नाउ। सो आई विल कैलकुलेट फॉर, इधर है आपके पास 0 पॉइंट, लेट अस सपोज व्हाट 0.1 मोलर HCl, है ना? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बोथ H प्लस एज वेल एज OH नेगेटिव। इधर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं किसके लिए, लेट सपोज यू हैव 0.005 मोलर NaOH सोल्यूशन। ठीक, चलिए, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ, सबसे पहले कंसंट्रेशन जो होगा H प्लस आयन का, आप निकालिएगा, एसिड है, H प्लस की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, HCl ओनली। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, इट विल नॉट बी डिफरेंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग, ऑल दी HCl विल डिसोसिएट एंड गेट कन्वर्टेड टू H प्लस आयन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे, तो आपके पास कितना मोलर है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है ना? दैट वुड मीन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इंटू 10⁻⁻², लिख सकते हैं, ये सोनो प्लीज टेल मी। सही Yes. है, ठीक है। Now we know that one relationship between H plus and OH negative is what? The concentration of H positive into the concentration of OH negative. It is equal to how much? 10 to the power -14. -14। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So from here you can calculate the OH negative concentration, which will be equal to how much? 10 to the power -14 divided by 10 to the power -2. Now this will be equal to how much? OH negative का concentration होगा 10 to the power -12। 12
Make sense? Yes or no? So this will be also molar, and this will be also molar concentration. ठीक है? Any doubt, हर्षा? No, sir. Martin? नहीं, ठीक है. अब उसी तरह से यहाँ पे you are having base. So for base, strong base है NaOH, it will completely dissociate. So the concentration of OH negative will be equal to the concentration of NaOH that you have taken. Now concentration of OH negative will be equal to how much? 0.005 molar. आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 123. मेक सेंस? ये सुनो. Yes, sir. ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है आपको? सेम. द कंसंट्रेशन ऑफ H positive will be equal to 10 to the power minus 14 divided by 5 into 10 to the power minus 3. This will be equal to 1 upon 5 into 10 to the power minus 3 will go above. It will become minus 11. 1 upon 5, it is equal to how much? 0.2 into 10 to the power minus 11. That is the concentration of H positive. अगर आप इसे थोड़ा और ठीक करना चाहें तो 2 into 10 to the power minus 12 is the concentration of H positive. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. सो व्हेन यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस तो यहाँ पे आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी. बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. रेज योर हैंड वंस यू हैव कॉपीड दिस डाउन. Sir, last week you said you would take quantitative analysis. So will that happen in the regular classes? यस. व्हाई यू नीड इट मोर रिसेंटली? No, sir, it's fine. अच्छा. नहीं, कब लाइक एग्जाम के लिए चाहिए ना? बोर्ड मतलब जब आपका 11th का एग्जाम होगा उसके लिए चाहिए ना, या फिर प्री बोर्ड Yes, के लिए? हाँ. yes, प्री sir. बोर्ड will be प्री बोर्ड. So, like, if it finishes, it's good only. अच्छा, हाँ, ठीक है. uh, एक्चुअली सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था ना, इस वजह से हम वो नहीं लिए थे अभी. ठीक है, फाइन. देन आई विल हैव टू टेक एक्स्ट्रा क्लास. ठीक है. Okay, sir. यू आर गोइंग टू स्कूल राइट नाउ या यू हैव हॉलीडेज? I think I won't be, like, holidays are not there, but I won't be going. यू आर नॉट गोइंग. Yes, sir. Okay. So some I will ask other students, and if it is possible, then we will have one class in the morning, है ना, with both the batches. There are two batches ना, तो दोनों को मिला के ले लेंगे. ठीक है. Okay, sir. Okay. Now, B is second type of calculations that or numericals that you are going to get. It is going to be calculation of H positive and OH negative, calculation of the concentration of OH negative and H positive by using, or rather from, Ka and Kb of weak acids and bases. ठीक है ना? ए भी लिखते हैं आप, लेकिन पूरा लिखेंगे ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है. अब ध्यान से देखिए जरा. यहाँ पे भी हम दो यूज कर लेते हैं ना. वी आर गोइंग टू टेक टू डिफरेंट. एक ही साथ पैरेलली दोनों को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है. चलिए. सो इन वन केस वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड
This is the given data. Concentration of NH4OH. It is given as 0.1 molar. And since this is the base, उसका Kb दिया हुआ है. Kb is given as 1.8 into 10 to the power -5. ठीक है, ये एक केस है आपके पास. And we have to calculate what? Both the concentration of H positive as well as the concentration of OH negative. Second case में आपको एक acid दिया हुआ है, that is HCN. The concentration of HCN, it is given as 0.2 molar, and the Kb for this, it is given as 4.9 into Kb नहीं, Ka होगा ना इसका, my bad. Ka is given as 4.9 into 10 to the power -10. ठीक है, so these are the values that you have been given. क्वेश्चन देखिए, सवाल में आपको ना हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, H प्लस एंड OH नेगेटिव प्लस. ध्यान रखिए, अगर आपने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल ली, देन यू कैन कैलकुलेट द पीएच आल्सो. ठीक है, तो पीएच तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है. राइट नाउ ओनली आई एम गोइंग टू डू द H प्लस कंसंट्रेशन. उससे पीएच निकालना आप ही काम, आपका काम है. ठीक है, H प्लस से पीएच तो निकाल सकते हैं ना, यस और नो हर्षा, मार्टिन? यस सर. ठीक है, चलिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, when we have NH4OH, so NH4OH will dissociate into NH4 positive and OH negative. The Kb for this reaction will be equal to concentration of NH4 positive, concentration of OH negative divided by the concentration of NH4OH. Concentration of NH4OH. अब प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज कंसंट्रेशन ना, ये आपको इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन. ठीक है, दीज आर व्हाट? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. अब एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहली बात, this NH4 positive and OH negative, the amount of NH4 positive form will be equal to the amount of OH negative form. Make sense? Yes or no? Tell me. Because the amount of NH4OH is dissociated. जितना वो डिसोसिएट करेगा उतना ही NH4 पॉजिटिव बनेगा, उतना ही OH नेगेटिव बनेगा. मेक सेंस ना? यस और नो? सही है? हाँ जी हर्षा, मेक सेंस? यस और नो? यस सर. यस ना, ठीक है. सो आई कैन राइट दिस एज, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद OH नेगेटिव, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, दोनों का सी. ठीक है, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ NH. सॉरी हर्षा, Stoichiometric coefficient is 1 for both. सॉरी. Sir, is it because the stoichiometric coefficient is 1 for both? या करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट है ना. अगर यहाँ पे 2 कहीं पे होता तो हम उसको ट्वाइस लेना पड़ता हम लोग. ठीक है, बट वी वुड ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन द टर्म्स लाइक द कॉन्जुगेट एसिड और बेस विल व्हाटएवर इज प्रेजेंट विद OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, वी विल ट्राई टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ओनली, सो दैट हमारे पास वेरिएबल्स कम हो जाए. मेक सेंस हर्षा? Yes. ठीक है, नाउ प्लीज सी द Kb वैल्यू. दिस 1.8 into 10 to the power -5. It is even lower than 10 to the power -3. That means reactant जो होगा, इसका जो 0.1 मोलर लिया हमने, उससे बहुत ज्यादा कम नहीं होगा. मेक सेंस हर्षा? Yes or no? Then again. See, what I am trying to say is the consent, as you remember, extent of reaction, K जो होगा, it could be less than 10 to the power, K is less than 10 to the power -3, K is in between 10 to the power -3 and 10 to the power +3, and K is greater than 10 to the power +3. Were you there in that class? Yes. है ना? So when it is 10 to the power -3 से भी कम होता है K, the value of K is less than 10 to the power -3. In that case, reactants dominate, right? Remember? Yes. So we say that reaction hardly takes place. It takes place, but the amount of reactant that we have taken, उसमें बहुत considerable change नहीं आएगा. It would be less than 0.1, but it will not be too much less than 0.1 कि हम 0.1 के अलावा कुछ और नंबर लिखें. ठीक है, so here we are going to take the same concentration as that of,
because what we are seeing this particular value kb, and then only we are writing here 0.1. And what is the value of kb? kb की value है 1.8 into 10 to the power minus 5. This makes sense, Harsha? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Now we can write the concentration of OH negative squared will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 into 0.1 concentration of OH negative. The concentration of OH negative will be equal to root over 1.8 into 10 to the power minus 5 into 0.1. If you remember, Harsha, now this is what? Concentration of OH negative. और ये जो वैल्यू है आपकी 1.8 into 10 power minus 5, this is nothing but Kb. And this is the concentration of the base. ऐसा ही कुछ हमने एक्सप्रेशन लिखा था किसके लिए? एसिड के लिए. अच्छा, यहाँ पे हमने वो चीज नहीं लिखी ना. यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है ये. एक ना आप इसके लिए भी लिख लीजिए जरा. आई विल मेक सम स्पेस यहाँ पे. द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कैन बी गिवन बाय रूट अंडर Kb into C. ठीक है. So now just calculations is remaining, nothing else. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Similarly, अब यहाँ पे तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ना. क्या लिखेंगे? देखिए, आई विल राइट नाउ वी हैव गॉट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. इसके बाद H पॉजिटिव का भी कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा. सो थोड़ा सा ट्राई करते हैं ना. ध्यान दीजिए जरा. सी हियर वी हैव रूट ओवर 1.8 into 10 to the power minus 5, 0.1 10 to the power minus 6. मेक सेंस? yes or no? Yes, sir. ठीक है. अब उसके बाद है आपके पास इसको 18 नहीं कर सकते इसको 180 वी कैन डू. ठीक है. आई एम गोइंग टू मेक दिस एज 180. So this will become 10 to the power minus 8 का root over. Make sense? Yes, sir. Now this would be equal to 10 to the power minus 8 में अगर root आप value put कीजिएगा then it will become 10 to the power minus 4 and root over 180. ठीक है. Yes. Can you calculate the root of 180? आपको आता है root निकालने? Yes, sir. Tell me what will be the value. आपका 14 का कितना होता है स्क्वायर? आई थिंक 14 स्क्वायर इज क्वाइट नियर 196 or something. I think 14 square is 14 is 196 और 12 का कितना होता है? 144. So 144 196 13.5 के करीब आई थिंक होगा. 13 का कितना होता है? 13 is 169. 13.5 ले लीजिए आप इसको अप्रोक्सीमेटली इन बंडल. आपको कितना आ Yes, रहा है कैलकुलेटर? 13.4. 13.4. हाँ ठीक है. फिर आपने अगर कैलकुलेट किया ठीक है. हमने तो बस लाइक बस वियर्ड अप्रोक्सीमेशन ओनली. 13.4 ही लिख लीजिए फिर, है ना. अब देखिए जरा यहाँ पे ना हमने जो 180 वगैरह जो कुछ किया ना उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं. ठीक है. सी हियर हर्षा, आई कुड हैव टेकन 18 आल्सो, है ना. बिकॉज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 1.8 इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. ठीक है. आई जनरली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. ठीक है. आई डोंट डू द होल रूट थिंग. सो कैन यू कैलकुलेट द रूट ऑफ 1.8 आल्सो, हर्षा? Sir, with decimals, it's a bit confusing. इट्स अ बिट कंफ्यूज. ठीक है. दैट मींस यू नीड होल नंबर्स, राइट? Yes, sir. हाँ.
तो आप इसको क्या कर सकते थे, 18 भी कर सकते थे, Yes, sir. but we did not do 18. Why we did not do 18? Because if we did 18, it would be 10 to the power minus 7. And 7 divided by 2, we could not have written a nice number as 10 to the power. Make sense? Yes, sir. In order to have even number as the power of 10, we made it 180 and not 18. जबकि 18 से भी काम चल जाता. Make sense, Harsha? Yes, sir. ठीक ना? So you will keep this in mind while calculating. Okay. So now we can write the concentration of OH negative is 1.34 into 10 to the power minus 3. And the concentration of H positive will be equal to what, 10 to the power minus 14 divided by 1.34 into 10 to the power minus 3. This would be equal to जो भी 1 upon 1.34, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 to the power minus 11. ठीक है, this will be the concentration of H positive. ठीक, make sense ये सुनो. Yes, sir. No, for HCN तो हम we can do directly things, right? For HCN what I will do, I will say that the concentration of the H positive will be equal to the root over Ka into C. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 10 to the power minus 10 है, so we can inherently ignore, we can hardly say that reaction is taking place. So same concept यहाँ पे भी लगेगा, and at last you will get the same thing. ठीक है ना? I am using directly the formula. I hope it is fine, right, Harsha? Yes, sir. Sir, if it's not like 10 to the power minus, it's greater than 10 to the power minus 3, then we can't use the formula. Then you cannot use the formula. और लेकिन वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है? वीक एसिड के केसेस में वो कभी होगा ही नहीं. इट विल बी ऑलवेज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3 होगी, तभी तो वो वीक है. ठीक है, Okay, sir. ओके. 4.9 into 10 to the power minus 10 into 0.2 रूट ओवर. ठीक है, सो अब 4.9 है और इधर 2 है यार, मतलब इसको तो चलिए 49 कर देते हैं, ठीक है, और इसको 2 कर देते हैं. 49 और 2 कर देंगे तो एक डेसिमल पॉइंट इधर बढ़ा रहे, एक डेसिमल पॉइंट इधर बढ़ा रहे, 10 टू दी पावर माइनस 12 हो जाएगा फिर, है ना? मेक सेंस? Yes, sir. 49 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 विल बिकम 10 टू दी पावर माइनस 6. 2 हो जाएगा आपके पास रूट 2. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रूट 2, हर्षा? Sir, रूट 2 इज इक्वल टू 1.4 1.3. 1.414. याद आया, है ना? Yeah. ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो यू हैव 7 इंटू 1.4. So 14 sevens are how much? 98. 98. So it will be 9.8 into 10 to the power minus 6. That is the concentration of H positive. Make sense? Yes, sir. फिर OH नेगेटिव निकल जाएगा ना? Yes. See, I know calculations है, ठीक है, but आपके सिलेबस में, मेरे सिलेबस में थोड़ी ना है, आप ही को पढ़ना है. ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कैलकुलेशंस है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं. And this is one type of numericals here. Acha, one more question that can be asked is regarding the calculation of percentage ionization और the alpha degree of dissociation के बारे में वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है? और interchangeable things can also be asked, ठीक है? अब चलिए जरा इसी तरह के कुछ सवाल हैं, उनको हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं. Since we are having some, चलिए खैर इसको हटाइए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग. For the HCN case only सवाल लिखिएगा. Calculate. Sir, is there more theory after this? Yes. Okay. बट दिक्कत ये है कि जो अभी हम लोग जो टॉपिक चल रहा है ना,
इसमें यू हैव ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, Okay. तो वो मतलब मेन यही है अभी। उसके बाद आगे है कैलकुलेट परसेंटेज, चलिए इस तरह से लिखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर हम सिर्फ थ्योरी कराए ना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट आपको दिक्कतें सवाल में ही आने वाली हैं। थ्योरी हम पढ़ा भी देंगे तब भी आपसे सवाल नहीं बने, until and unless we discuss questions, and that is why इस चैप्टर में इतने ज्यादा सवाल दिए हैं, एनसीईआरटी ने किसी वजह से यहाँ पे इतने सारे सवाल दिए हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ, विल टेक द सेम थिंग है ना, 0.2 मोलर HCN solution, 0.2 molar HCl solution, which has Ka is equal to क्या था, 4.9 इंटू 10⁻⁻10 या 11 क्या, -10, 10⁻⁻10। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकाल के, अल्फा इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। मेक सेंस, मेक सेंस Yes. हर्षा? Yes. ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे। तो आपके पास क्या था, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ना वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑल्सो, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखिए दिस के ए इज वेरी स्मॉल, आप मतलब यहीं से आदत रखिए फॉर्मूला यूज करने का। के ए इज वेरी स्मॉल ना, राइट हर्षा? Yes, sir. तो हमारे पास अगर आपको याद हो, जो के ए की वैल्यू आ रही थी, के ए वॉज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, याद आया? Yes, sir. डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, यू विल डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग दिस नाउ सिंस एज के ए इज वेरी स्मॉल। जब ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंटली छोटा है, तो वो तो तभी होगा ना जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत कम। ठीक है, एज के इज वेरी स्मॉल, अल्फा विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, बहुत कम होगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, के ए अपॉन सी का रूट ओवर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद आया, yes or no? Yes. Ka is equal to how much? 4.9 into 10⁻⁻10 divided by C, that is equal to 0.2. So and इसका रूट ओवर कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों से देखिए यहाँ पे भी 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ से भी 1 डेसिमल पॉइंट, दैट मीन्स वी कैन रिमूव इट, है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49/2 का रूट ओवर इंटू 10⁻⁻5। मेक सेंस है ना? Yes, sir. नहीं हर्षा? Understood, sir. अंडरस्टूड। 49 का रूट 7, इसका 1.4 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए जरा इसको कैसे किया जाएगा, इसको करते हैं ऐसे, इसको करते हैं 70/14 इंटू 10⁻⁻5। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, कितना हो जाएगा 70/14, 5 सा, है ना? Yes. 5 सा, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू 5, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना परसेंटेज के लिए, फ्रैक्शन से, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100, विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3, दैट विल बी इक्वल टू 0.005, ऐसे लिखेंगे ना? ठीक है, Yes, sir. कोनो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? Sir, so we never use that formula where 1 minus alpha is there. यूज करेंगे ना, जब वही आपका के जो होगा 10⁻³ -3 और -10⁻+3 के बीच में होगा, तब यूज So then करेंगे।
use directly the formula for strong acids, right? Sorry. What? So then we can like equate the H plus ions and नहीं, वो तो तब होगा ना जब प्रोडक्ट आर डोमिनेंट 10⁻+3 से भी ज्यादा होगा, जब के याद आया? मेक सेंस है ना? so if नहीं, it's in between, we use this formula. हाँ, जब इन बिटवीन होगा देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। Okay. ठीक है, Yeah. चलिए कॉपी दिस डाउन। जस्ट वेटिंग फॉर मार्टिन नाउ। मार्टिन वेटिंग फॉर यू, जल्दी कीजिए। Since Martin is not here. See here. Now another question is, Harsha, when you have been given, अच्छा Martin done. Okay. When you have been given the degree of dissociation and वहां से फिर आपको pKa या फिर Ka निकालना है, ठीक है? So see, a question is there in NCERT कुछ इस तरह से, please write. Alpha of alpha मतलब degree of dissociation of 0.1 molar bromoacetic acid is 0.132, ठीक है? अब देखिए 0.132 इज अ बिग नंबर, इट इज नॉट वेरी स्मॉल देन 1, कंपैरेबल नंबर हो गया अब, ठीक है? सो इन दिस केस नाउ यू कैन नॉट इग्नोर 1 माइनस अल्फा वाला केस, है ना? ब्रोमो एसिटिक एसिड इज 0.132। अब देखिए कितना आया अल्फा आपका, 0.005, है ना? And then only we have ignored, and that is only happening because we have a very small value of what? We have very small value of the Ka. Make sense, yes or no? Yes. ठीक है, अब देखिए जरा, bromoacetic acid is 0.132. Calculate pH of the solution
and pKa of ब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक। ना सबसे पहले यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0.132 and you have been given the concentration that is equal to how much? 0.1 molar, 0.1 molar. अच्छा, now one thing if you remember, देखिए, the concentration of H plus, if you have degree of dissociation, अब ये चीजें याद याद नहीं रहती बच्चों को। concentration of H plus when you have degree of dissociation will be equal to C alpha, याद है या भूल गए? हाँ हर्षा, जब Sir, हम लोगों how? ने सॉरी, Sir, how? हाउ, हाउ ऐसे हाउ की याद कीजिए, जब हम ऐसे नहीं कर रहे थे। आपने अगर अल्फा दिया है और आपके पास 0.1 है तो आप 10 मतलब 1 मिलेगा, 20 मतलब 2 मिलेगा, 50 मतलब 5 मिलेगा। तो वही अगर आपके पास सी है तो सी टाइम्स अल्फा मिलेगा। याद आया नहीं याद आया? Yes, sir. याद आया ना, सी अल्फा होता है। ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे, ये दिक्कत है। वरना ये सारी चीजें आसान है। ठीक है, एच प्लस, अब मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच प्लस सी अल्फा हो रहा है, वहां पे एच प्लस रूट अंडर के ए सी हो रहा है। सो इट इज कंफ्यूजिंग, बट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से यू हैव टू अप्लाई। ठीक है हर्षा, फाइन। Okay. Yeah. So we have C alpha, it is equal to, concentration is 0.1 molar into 0.132. ठीक है, so this will be equal to 0.0132 molar. Make sense, yes or no? Yes, sir. ठीक है, आपके पास जब H प्लस आ गया तो बहुत ही आसानी से क्या आ जाएगा, पीएच भी आ जाएगा। पीएच विल बी इक्वल टू minus log of the concentration of H plus ions. This will be equal to minus log of 0.0132। ठीक है, अब इसका आपको वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज लॉग के कैलकुलेशन में जाएंगे तो फिर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, माइनस है, माइनस लॉग ऑफ 0.0132, इट इज इक्वल टू माइनस 1.88। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1.88। दिस इज द पीएच। ठीक है, लॉग का आप मान लो कि आपको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, लॉग का बस मान लीजिए कि आपको वैल्यू दिया हुआ है, लॉग ऑफ 0.132 इज इक्वल टू माइनस 1.88। फाइन हर्षा, Yes, sir. विल अज्यूम दैट, ओके, फाइन। Yes, sir. ठीक है, मूविंग। पीएच आ गया आपके पास। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट द के। रिमेंबर दैट के, पीके निकालना, तो पीके के लिए तो के निकालना होगा। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ हियर वी कैन नॉट इग्नोर दी 1 माइनस अल्फा, बिकॉज अल्फा आपको दिया हुआ है ना, एंड दी अल्फा इज नॉट वेरी स्मॉल देन 1। बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, सो विल हैव सी इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1 इंटू 0.132 इंटू 0.132 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.132। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 132 के स्क्वायर की कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। This is equal to 0.0017424, 0.0017424, which is divided by 1 minus 0.132, which is 0.868। ठीक है, when you calculate this value it comes out to be, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, देखिए जरा। ये आपके पास 17 तक हमने निकाला, और ये हमने निकाला ऐसे 8.7 के करीब हो जाएगा। सो 17 तक के लिए निकालने के लिए 1 2 3 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 8.7 के लिए 1,
है ना, 10⁻⁻1, मेक सेंस। Yes, sir. तो 8.7 का अगर डबल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 17 नहीं आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, क्योंकि ये 17 से ज्यादा ही है, 17.5 अगर आप ले लें, 17.5 ले लो अगर आप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके। तो 8.7 का डबल करेंगे तो 17.5 के करीब आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 8 8 16 होता है ना, 7 7 14 होता है, 1.5, मेक सेंस। Yes, तो दिस sir. विल बी इक्वल टू 10 × -1 ऊपर जाएगा, 2⁻⁻3। दिस इज योर के ए, एज यू कैन सी इट इज व्हाट इन बिटवीन, ये 10⁻³ से ज्यादा है ना, राइट। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये के आ गया। अब पी के जो होगा विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ विल बी इक्वल टू माइनस log 2 एंड प्लस log 10⁻³ माइनस को अगर हम प्लग इन करेंगे अंदर, सो log 2 होता है कितना, 0.3, लास्ट क्लास वी लर्न ना, इट इज 0.3, एंड माइनस, ये -3 नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.7 pKa। लॉग का तो हमने ना आपको दिया ही नहीं है लेक्चर, हम भूल ही गए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन लॉग कहाँ है भाई, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पीएच, यहाँ है लॉग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, देयर आर 2 क्लासेस, लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है, अभी ये भेज देते हैं वरना फिर से भूल जाएंगे। यूट्यूब लर्निंग वीडियो, व्हाट इज द डेट, डेट इज 10 जुलाई। जुलाई इज व्हाट मंथ, 7th ना, जुलाई अगस्त, 10/07/2023। बेसिक, ठीक है, that's it। ठीक है, हर्षा, आई हैव सेंट यू द लेक्चर, मतलब वो ग्रुप में है, ठीक है, Okay, आई sir. यू कैन फाइंड इट। Watch that. सॉरी, Sir, I was there in the class. यू वर देयर इन द क्लास, I watched it, sir. लॉन्ग आपने पढ़ा था, Sir, you're recording. हाँ हाँ, I watched it. हाउ, व्हेन डिड यू वॉच इट, हाउ डिड यू वॉच इट, Sir, you only sent. आई सेंट, व्हेन डिड Sir, आई you सेंड, said there was a class for log and you took an extra class for log. वो जो वेकेशन में लिया था हमने, Yes, sir. ओ अच्छा अच्छा, तो उस टाइम आप आए थे, I think I watched the recording. यू हैव, मतलब क्लास में नहीं थे आपने, लेकिन रिकॉर्डिंग देखी है, Yes, sir, ये recording. class, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने मांगा था क्या उस टाइम पहले कभी, Sir, ask Learnivio only. अच्छा यू आस्क्ड लर्निंग, ओके ओके, अच्छा अच्छा, fine, fine। अभी कल, No, sir, long ago. लॉन्ग अगो, अच्छा, ठीक है, मे बी, चलिए ठीक है, हमने फिर से भेज दिया, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, Okay. रिवाइज करना हो लॉग के बारे में।
ओके, ठीक है, अभी तो हो जाएगा आई थिंक। कुछ सवाल, एक सवाल कीजिएगा। हम्म। ठीक है, ओके एक सर। सवाल कीजिए। ठीक है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। The ionization constant of HF is 3.2 into 10 to the power minus 4, है ना? यानी कि इग्नोर किया जा सकता है। मेक सेंस, राइट? यस। कैलकुलेट the alpha of HF in its 0.02 molar solution। अल्फा निकालने के लिए बोला है। ऑल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट। ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट। तो क्या क्या स्पीशी होगा? H प्लस होगा, F नेगेटिव होगा, एंड साथ में HF भी प्रेजेंट होगा, है ना? HF विल बी ऑल्सो प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉल्व कीजिए सर। यू कैन यूज कैलकुलेटर, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव माई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो अल्फा आपको निकालना है, फिर एच प्लस वगैरह सब कुछ निकालना है। निकालिए जैसे जैसे निकालना है आपको। अल्फा निकाल लीजिए सबसे पहले तो, डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला रूट अंडर के अल्फा अपॉन सी वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दी अल्फा फ्रॉम देयर। वंस यू हैव गॉट दी अल्फा, सी अल्फा से आप एच एच प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान है सर, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। Sir, how do I calculate the concentration? अल्फा आ गया आपके पास? Yes, sir. कितना है अल्फा? 0.12. 0.12। ठीक है, और सी है आपके पास, यू हैव द सी कंसंट्रेशन। Yes. तो H प्लस इज इक्वल टू, अल्फा रहने से क्या करते हैं? हाँ जी, KI.
CM, very nice. So that's the same for all. Sorry? It's the same for all. हाँ नहीं, H प्लस और F नेगेटिव का सेम होगा, HF का अलग होगा ना। HF का होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। याद है नहीं, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं। Um, है ना, so the 1 minus alpha 1. HF इक्विलिब्रियम विद H प्लस एंड F नेगेटिव। नहीं, अल्फा अब आपके पास आ गया है ना, 0.126, कर लीजिए माइनस। नहीं रहता तब उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है आशा? Okay. है ना। Okay, sir. और ऐसे नहीं कंसंट्रेशन, फिर तो HF की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है हम लोग में। तो कैलकुलेशंस में उसको यूज किया जाता है कि नहीं चेंज हो रहा टाइप से, बट व्हेन यू हैव अल्फा देन यू डोंट। तो HF आपके पास था पहले C, दिस वाज 0 and 0, the change was minus C alpha, here it was alpha, sorry C alpha, and here we got C alpha, and this became C minus C alpha, which is here we have C alpha and C alpha. This is I, C, E. You have not used this table, I understand that, but this C minus C into 1 minus alpha, ठीक है? So this is the concentration of the acid हो चाहे base हो at equilibrium. This is the concentration of acid or base at equilibrium. This is the concentration of acid or the conjugate acid or the base. ठीक है? So you say that alpha आपका आ रहा है, alpha is equal to 1.0.212, 0.12 ना, right? Yes, sir. So यहाँ पे आपके पास HF की concentration C is equal to 0.02 into 1 minus 0.12. C alpha will be equal to 0.2 into 0.12. This is HF. इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा ये, 0.02 इंटू 0.88, राइट? करेक्ट है ना। Yes, sir. 88 का डबल कितना हो जाएगा, 176, 176, तो 0.0176, करेक्ट, यही है। Sir, is it क्या है? molar? हाँ, मोलर 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 आएगा, कंसंट्रेशन मोलर होगा, and concentration of H positive will be equal to C alpha. C alpha is 0.02 multiplied by alpha is 0.12. तो 12 का डबल हो जाता है 24, we'll have 24 and 1 2 3, तो 0.024, and which will be also the concentration of F negative. सही Yes, sir. है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कुछ चीजें जो पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं बस, ठीक है। नाउ इट डजंट मैटर वेदर वी आर हैविंग एसिड्स और बेस, ठीक है, एसिड हो चाहे बेस हो उसका कोई दिक्कत, मतलब देयर इज नो डिफरेंस टिल नाउ, एंड वी हैव डन ओनली द केसेस इन विच द स्टोइचियोमेट्री इज वन फॉर ऑल, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट वी हैव डन, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस with one H plus ion and one OH negative ions, ठीक है, one OH negative, ठीक है। that means meaning स्टोशियोमेट्री इज इक्वल टू वन, सारा पूरे के पूरे इक्वेशन में स्टोशियोमेट्री वन है। अगर स्टोशियोमेट्री वन है देन ओनली वी कैन जनरलाइज अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। क्या क्या जनरलाइज कर सकते हैं हम, फर्स्ट थिंग दैट वी कैन जनरलाइज इज नंबर वन, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम, कब, इक्विलिब्रियम पे, है ना। एंड अल्फा के बारे में एक बार ही में लिख देंगे दैट इफ इट इज लेस देन, जब K की वैल्यू हो या फिर अल्फा बहुत ज्यादा छोटा हो तो क्या करना है। सेकेंड, we can say the concentration of एसिड लिख लो चाहे बेस लिख लो ना, बेस भी लिख देते हैं यहाँ पे, और you have concentration of the BOH is equal to C into 1 minus alpha. Second is the concentration of H positive or OH negative
और द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव और द बी पॉजिटिव जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, इन सबका कंसंट्रेशन कितना होता है सी अल्फा एट इक्विलिब्रियम। मेक सेंस? सुनो यहाँ तक हर्षा? Yes. ठीक है। दैट मीन्स इफ यू नो द अल्फा तब आपके पास एच प्लस सी कंसंट्रेशन पता है, आपको एच नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन पता है। नाउ कम्स द केस व्हेन वी हैव टू टेक अल्फा को नेग्लेक्ट करेंगे कब और कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अल्फा के बारे में, इफ k is what, k is less than 10 to the power, अब k में आपके पास k a k b दोनों आ जाएगा है ना, k लिख रहे हैं बस, लेस देन 10 टू दी पावर -3, देन इग्नोर अल्फा इन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पे इग्नोर करेंगे। और दूसरे केस में कब इग्नोर करेंगे हम लोग? व्हेन अल्फा इज गिवन, अल्फा इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब कैसे बताएं? वेरी स्मॉल मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, should I give you some value? So 0.01 is considered small. 0.01? Yes. हाँ, 0.01 को आप स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। Okay. वेरी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेटली, और अदर आई शुड से लेस देन, है ना, लेट्स से लेस देन 0.01। या फिर एक काम करें, शुड आई कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आपके पास 10 टू दी पावर -3 होगा, और कंसंट्रेशन पे भी तो डिपेंड करेगा सर, ये इज गोइंग टू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑल्सो ना, अल्फा वुड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑल्सो। अगर कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, सो इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑल्सो। कि ए इज, अगर हम 10 टू दी पावर -3 और अपॉन 1, 10 टू दी पावर -3 का रूट, So if alpha is given in the question and it's small, we can ignore. अच्छा उन्होंने बोला हुआ है अगर, Yeah, sir. देन इट इज फाइन। Okay. बट अगर आपके पास 0.2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 10 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा वहाँ पे के से। उसके बाद 0.01 सीम्स फाइन, बिकॉज वी कैनॉट डिसाइड एनीथिंग, बिकॉज ना ये अल्फा इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑल्सो। इवन इफ लेट सपोज हम जैसे यहाँ पे तो के बारे में बोल दे रहे हैं, that we are saying that 10 to the power -3, and you know that alpha it is equal to what, ka upon c का root over. Now even if we put the value of ka as 10 to the power, see 10 to the power -3 is the cutoff value ना, इससे कम हुआ अगर तो वो छोटा हो जाएगा, but divided by c, but what should we take the c? We cannot take c as 1 because generally 1 मोलर बहुत कम टाइम में होगा, so 0.1 0.2 0.3 इस तरह से रहता है। ठीक है, so it would depend on the concentration also, so 0.01 लेके चलते हैं, लेकिन अल्फा व्हेन इट इज गिवन ना, तब आप मत ही लीजिएगा उस, मतलब देन यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा वहां पे। ठीक है, अल्फा Okay, इज sir. वेरी स्मॉल हम ऐसे करके लिख देते हैं, वैल्यू इज नॉट गिवन। ठीक है, वैल्यू नॉट गिवन। ठीक है, तो जब आपके पास वैल्यू नहीं दी हुई हो तब तो कोई दिक्कत, मतलब देन ओनली इट इज अ प्रॉब्लम ना कि वैल्यू नहीं दिया हुआ अल्फा का, फिर उसके बाद वो यू विल हैव अ लीनियर इक्वेशन इन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, और एक ही इक्वेशन होगा, पेयर नहीं होगा। ठीक है, सो इन दैट केस ओनली वहां पे अल्फा दिक्कत करेगा, सो वैल्यू इज नॉट गिवन एंड अल्फा इज, बस ये बोला हुआ है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन इग्नोर, है ना, देन इग्नोर अल्फा इन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए, so that's it for today, and there is an assessment, if you can you check the Learnivio app?
Harsha and Martin. Is there? Sir, it is not available. अच्छा ठीक है, leave it there. ठीक है, Sir, again. I have a doubt in a question. जी जी बताएं. Sir, I sent in WhatsApp. अच्छा. Sir, if it's acidic medium, how to balance that? अच्छा एक सेकंड. MnO4 ऑक्सीडेशन 5 पर एटम, और सल्फर का आपने किया है +6 नहीं है वहां पे. HSO4 में +6 नहीं होगा. देखिए. HSO4 ही है ना, HSO3 तो नहीं है. Oh, 4 ही sir, होगा वैसे. 4 नेगेटिव. I'm getting 6. 6 कैसे होगा? X पहले तो हाइड्रोजन का होगा 1 + X, है ना? Yes. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, +6 ही होगा, सॉरी. इग्नोर दैट. ठीक है, फाइन फाइन बना लो. माइनस भी है और वहाँ पे प्लस भी है, सो ठीक. दिस विल बी +6. सो अब उसके बाद क्या हो गया? आपने इसकी टोपी उसके सर कर दिया है ना. 5 का आपने उधर कर दिया, इधर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. और ठीक है. नाउ यू आर हैविंग -2 और -1. यहाँ पे Yes. तो कोई दिक्कत नहीं है. 2 -1 -2 0 2 2 4 5 -1 5. ठीक है. तो रिएक्टेंट में आपके पास है टोटल चार्ज -2, फिर प्रोडक्ट्स में आपके पास चार्ज है -1. ठीक है. एंड यू हैव H+. ठीक है. Yes. फाइन. अब H+, आप कहाँ डालिएगा H+? हम्म. इन दोनों को बराबर, मतलब यू हैव टू इक्वेट दिस. तो -2 + x इज इक्वल टू -1 लिख लीजिए आप. ठीक है. या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, -2 इज इक्वल टू -1 + x. x की वैल्यू कितनी आ रही है? दोनों इक्वेशन में बताइए. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x हियर? -1. यहाँ -1 है. +1. -1 होगा. +1 पक्का है ना? +1 ना. -2 विल गो दैट साइड, +1 सही नहीं? ठीक है. तो यहाँ पे x Yes. की वैल्यू क्या आ रही है? -1. -1. ठीक है. तो आपको ऐड क्या करना है? H+ ऐड करना. तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, उसी वाले इक्वेशन में आप H+ ऐड कर दीजिए. तो यहाँ पे आप क्या ऐड कीजिए? H+. ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा चार्ज. तो चार्जेस आर बैलेंस्ड. मेक सेंस? Okay, sir. Then we'll add half H2. H2O. नहीं नहीं, हाफ H2. वो देखते हैं ना, करते हैं उसको. ऐसे ही हाफ H2 तो नहीं करने, देखिएगा. सो यह बैलेंस डेट इतना ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना? 2 MnO4 नेगेटिव इज देयर. 5 2, तो यहाँ पे फिर से 5. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे. यू आर एडिंग हियर हाउ मेनी H+? 1 H पॉजिटिव. काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हियर. कितना है आपके पास हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है आपके पास? 5. 5 हाइड्रोजन्स. तो कहाँ डालेंगे पानी? In the reactant itself. Here you will add 2 moles of H2O. Now see, is it balanced?